Hanging on by a thread. We're more fragile now than we have ever been. Loving words left unsaid. Used to have it all, but our time came and went. Hey guys, good morning. This is Gaurav and welcome back to the channel Carla and welcome to our YouTube channel Travel He's here, I'm here, you're here, we're here. So आज है संडे और नया दिन नई शुरुआत और हम आ चुके हैं हाईवे पे। आप मेरे पीछे जो हाईवे देख रहे हो ये है राजकोट से गोंडल जाने का हाईवे और हम जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी सी प्लेस, बहुत ही सुंदर जगह पे जिस जगह का नाम है, वैसे मैं वहाँ पे चल के आपको बताता हूँ। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कौन सी जगह पे मैं जा रहा हूँ। तो गाइस करीबन सुबह के 8 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं आज बहुत ही प्यारी सी जगह जिस जगह का नाम है अनलगढ़। अनलगढ़ जो है वो राजकोट से करीबन 40 किलोमीटर से और राजकोट के गोंडल की साइड जो रोड है वहीं से ये प्लेस उसी पे पड़ता है। अगर आपको आना है तो इसकी लोकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आई थिंक गाइस वहाँ पे देखने के लिए फोर्ट है, टेम्पल है और भी कुछ बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे हैं। सो चलिए चाहते हैं वहाँ पे देखते और आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं अनलगढ़ पे और आप देख सकते हो यहाँ से जाएंगे हम ऊपर और आपको दिखाते हैं ऊपर के भी अच्छे अच्छे नज़ारे। तो चलिए चलते हैं ऊपर। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं अनलगढ़। मेरे पीछे ये जो देख रहे हो टेम्पल, माताजी का टेम्पल है यहाँ पे और उस साइड है फोर्ट। तो चलिए आपको दिखाते हैं टेम्पल और ये जो फोर्ट है, फोर्ट का कुछ पार्ट है वो भी आपको दिखाते हैं। तो भाई यही है वो टेम्पल जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, काली माता जी का टेम्पल है। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो अनलगढ़ जो है इसको गोंडल स्टेट ने बनाया था आई थिंक 18th सेंचुरी में। इस फोर्ट का नाम इसलिए पड़ा है, अनल मीन्स आग। आग से भी इस किले को नष्ट यानी कि डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता क्योंकि लकड़े या लोहे के बिना इसको बनाया था।
guys, we're back. We're here in Analgadh. It's a good place for sightseeing. Anyways, I'm so hungry when we reach the top. So I will going to eat. First, I need to use my sanitizer. I will going to eat soya paneer fried. Chan-chararan! Ah, yummy! Actually, this is my recipe in the Philippines. Because in our family, I am the one who knows how to cook. Actually, yeah, I don't like fly. Actually, this is with soya sauce, cocoa aminos, and with the limbo, or we call it the lemon, Indian lemon. But we call it in my country calamansi. And I put some onions. So I hope if you are here, then I will give it also to you. I will share it with you, but I will eat it. तो गाइज वी आर डन हियर और अब हम चलते हैं वापस एज यूजुअल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी पार्ट इसमें अच्छा लगा हो, तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, बाय। Don't let me drown. Don't let me drown. Don't let me drown.